अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज की इस गुफ्तगू में हम आपको बताएंगे कि साइंटिफिक कम्युनिटी क्या है, ये किन लोगों पर मुश्तमिल होती है, इसकी नॉर्म्स क्या हैं और इसको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। डेफिनेशन से शुरू करते हैं जी। अ कलेक्शन ऑफ पीपल who share a system of attitudes, beliefs, and rules that sustain the production and advance of scientific knowledge is called scientific community। तो ये ऐसे लोगों का मजमुआ होती है जो एक जिसमें एटीट्यूड, बिलीव्स और रूल्स जो हैं उनको ये एक शेयर करने का सिस्टम है इज्तमाही तौर पे, जो इसलिए कि नया नॉलेज साइंटिफिक प्रोड्यूस किया जा सके, उसको एडवांस किया जा सके और उसको सस्टेन किया जा सके। न्यूमैन 2014 पेज नंबर 12। In other words, the scientific community refers to the collective network of scientists, researchers, and institutions who engage in the pursuit of scientific knowledge। अब ये जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, ये जैसे हमने कहा कि ये मजमुआ होती है, कलेक्शन ऑफ पीपल होती है, तो ये कलेक्शन, अब इसको थोड़ा सा अगर हम एलेबोरेट करें तो इट्स अ कलेक्टिव नेटवर्क ऑफ, जिसमें साइंटिस्ट्स हैं, ये देखें ये पीपल हो गए, देन रिसर्चर्स, and then institutions. Even institutions together can work and they can produce new scientific knowledge, then can disseminate that scientific knowledge so that they can advance the scientific knowledge or they can add to the existing body of scientific knowledge। और ये काम ये कैसे करते हैं? थ्रू रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं एंड द शेयरिंग ऑफ फाइंडिंग्स। देखिए, रिसर्च तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उसकी फाइंडिंग जो है वो शेयर नहीं की जाती। यानी अगर आप हम रिसर्च करते हैं और अगर वो रिसर्च जो है वो बाकी लोगों के साथ शेयर नहीं होती, हम उसकी फाइंडिंग्स शेयर नहीं करते, तो उससे फिर जो साइंटिफिक नॉलेज है वो प्रोड्यूस तो हो गया लेकिन वो एडवांस नहीं हुआ, वो शेयर नहीं हुआ। तो आई थिंक द बेसिक फंडामेंटल फीचर ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी इज दैट इट मेक्स दैट knowledge public and makes the sharing of that knowledge possible. This community plays a pivotal role in advancing scientific knowledge and addressing global challenges by working collaboratively, adhering to the ethical standards, and disseminating research results through peer reviewed journals and conferences। जीमेन 2000। और इस साइंटिफिक कम्युनिटी का इसलिए बहुत बड़ा काम है साइंटिफिक नॉलेज की प्रोडक्शन में, उसकी सस्टेन करने में, उसके एडवांसमेंट में, कि ये कोलैबोरेटली लोग काम करते हैं, यानी आपस में मिलके। देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दोज हु आर वर्किंग और दे दोज हु आर प्रोड्यूसिंग साइंटिफिक नॉलेज, दे एडहेर टू द एथिकल स्टैंडर्ड्स। वो जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जो साइंस की अखलाकियात है, वो उनको फॉलो करते हैं और फिर डिसिमिनेट करते हैं रिसर्च रिजल्ट्स को थ्रू पीयर रिव्यूड जर्नल्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। और ये दो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जी, peer reviewed journals and conferences। Actually conferences are the primary platform of disseminating findings even before publishing a paper। I mean, most of the scientists and researchers present their paper in the conferences where the other people from their field, what we call peer, their peers, they critique their work so that their work can be improved before that gets published in some prestigious journal। And then research journals have their own process which we call peer review process or peer reviewed journals because they follow the peer review process। इस पे हम आगे जाके बात करते हैं। तो बुनियादी तौर पे यहाँ तक ये बात हुई कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु collaboratively and collectively work together to produce scientific knowledge, advance scientific knowledge, and then sustain that scientific knowledge, and then they share that knowledge with the other people। What we say that the scientific knowledge becomes public। कोर क्या है जी साइंटिफिक कम्युनिटी की, यानी साइंटिफिक कम्युनिटी बनी किन लोगों से होती है? द कोर ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी is made of researchers who conduct studies on a full-time or regular basis, usually with the help of assistants, many of whom are graduate students। Working as a research assistant, more or less as a trainee, is the best way to learn the details of the scientific research। So बुनियादी तौर पे साइंटिफिक कम्युनिटी की जो कोर है वो साइंटिस्ट होते हैं, जिसमें प्रोफेसर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स होते हैं, some are situated in the industry, most of them are situated और associated with academic institutions। और ये इनके साथ जो मिलके काम करते हैं वो रिसर्च असिस्टेंट्स होते हैं, जो अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं। I mean, those who are pursuing their degrees in research, they work with their professors, their supervisors, their trainers,
and ultimately with the passage of time they also become the member of scientific community because they also learn the norms of scientific community, ethics of scientific community, and the knowledge production, knowledge advancement and knowledge sustaining features of the scientific community. So बुनियादी तौर पे जो core of scientific community है वो researchers होते हैं, and then उनके जो assistants होते हैं, I mean those who assist them in conducting research, they are their graduate or undergraduate students. देन दी साइंटिफिक कम्युनिटी की जो नॉर्म्स हैं जी, अब उस पर हम बात कर लेते हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी की 5 बेसिक नॉर्म्स हैं, तो वन बाय वन हम इस पे ज़रा बात करते हैं ताकि आप अगर जब रिसर्च करें तो आपको भी पता हो। लेकिन इन नॉर्म्स पे बात करने से पहले मैं एक चीज़ एलेबोरेट कर दूं कि साइंटिफिक कम्युनिटी का मेंबर कैसे बना जाता है, यानी किसको हम कहते हैं कि वो साइंटिफिक कम्युनिटी का मेंबर है। तो देखें, साइंटिफिक कम्युनिटी का मेंबर बनने के लिए जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो पीएचडी होती है। वंस यू गेट पीएचडी डिग्री इन योर फील्ड यू ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, बिकॉज every field, I mean, like communication studies, sociology, uh, law, and biology, chemistry, physics, mathematics, literature, all these fields have their own scientific communities because they're working within their respective fields to produce scientific knowledge, then advance that scientific knowledge, and also sustain the production of scientific knowledge. So, ye jo, I mean, those who are holding PhD, they automatically become the member of scientific community. Then इसकी जब norms देख लेते हैं, पहली है universalism. Regardless of who conducts research, old or young, male or female, and of where it was conducted in United States, France, Harvard, or unknown university, or even in Pakistan or India. I mean, regardless where it is conducted, the research is to be judged only on the basis of scientific merit. I mean, this doesn't make any difference कि research कौन करता है, किस university में होती है, उससे उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं बढ़ती। रिसर्च की क्रेडिबिलिटी उसके साइंटिफिक मेरिट से बढ़ती है कि किस जिसने रिसर्च की है उसने कितना साइंटिफिक नॉर्म्स का ख्याल रखा है, साइंटिफिक एथिक्स जो हैं उनको फॉलो किया है। So for example, when a researcher conducts and completes a study, she submits it to a research journal. Then editor, a respected researcher who has been chosen by other scientists to oversee the journal. This is very important. The editor of a research journal is a guy who is a leading name in the field, and other scientists choose him to oversee the journal and see all the activities of the journal so that scientific knowledge is produced, and the scientific knowledge जो वो पैदा करता है उस जर्नल के अंदर वो पब्लिश करता है वो पीयर रिव्यूड हो। इसको हम आगे इस पे ज़रा बात करते हैं। रिमूव्स द टाइटल पेज, जब पेपर आप सबमिट करते हैं तो उसका टाइटल पेज रिमूव किया जाता है, विच इज़ द ओनली प्लेस वेयर ऑथर नेम appears, and then sends the report to several referees for a blind review. This is an important feature of science. That's what we call universalism. Science or the scientific knowledge is evaluated on the basis of the scientific merit, not the people, not the universities, not the countries where it is conducted. तो जब आप पेपर सबमिट करते हैं तो जो उसका असिस्टेंट एडिटर होता है जर्नल का, जो कि एडिटर को और एसोसिएट एडिटर्स को असिस्ट करता है, वो आपके पेपर का टाइटल पेज रिमूव कर देता है जहाँ पे आपका नाम होता है, आपकी एफिलिएशन होती है, आपकी ईमेल होती है, सारा एड्रेस होता है, एंड देन ही सेंड द पेपर फॉर द ब्लाइंड रिव्यू। ब्लाइंड रिव्यू का मतलब ये है कि जो जिस साइंटिस्ट को आपका पेपर रिव्यू करने के लिए भेजा जाता है वो नहीं जानता कि पेपर किसका है, और आप भी नहीं जानते कि पेपर किसको सेंड किया है रिव्यू करने के लिए। सो समटाइम दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल ब्लाइंड रिव्यू। सो इट्स अ ब्लाइंड रिव्यू, और समटाइम पीपल कॉल्ड ब्लाइंड डबल रिव्यू बिकॉज जो रिव्यू करता है उसे नहीं पता होता कि पेपर किसका है, और जिसका पेपर होता है उसे भी नहीं पता होता कि उसको पेपर कौन उसका पेपर रिव्यू कर रहा है। तो इस केस में दोनों पार्टीज को नहीं पता, तो इसलिए इसको हम डबल ब्लाइंड रिव्यू भी बाज़ कहते हैं। ब्लाइंड रिव्यू इज अ कॉमन टर्म व्हिच वी यूज for this process. The referees are social scientists who have conducted research in the same topic and the same area. अब जो जिसको पेपर भेजा जाता है, जिसको रेफरी कहते हैं या रिव्यूअर भी कहते हैं, वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट लोग होते हैं जो उस फील्ड पे ऑलरेडी रिसर्च कर रहे होते हैं। द रिव्यू इज कॉल्ड ब्लाइंड बिकॉज द रेफरी डू नॉट नो हु कंडक्टेड द रिसर्च एंड द ऑथर डज नॉट नो हु द रेफरी आर। मैं इसकी पहले इसको एलेबोरेट कर चुका हूँ कि चूँकि दोनों पार्टीज को नहीं पता होता, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट
a blind review, and some people even in the literature mention it as a double blind review. So both things have the same meaning कि ना रिसर्चर को पता होता है और ना जो रिव्यू कर रहा होता है पेपर उसको पता होता है कि ये पेपर किसका है. हाउ टू इंश्योर द नॉर्म ऑफ यूनिवर्सलिज्म, ये जो यूनिवर्सलिज्म की नॉर्म है इसको कैसे इंश्योर किया जा सकता है. दिस रीइंफोर्सेस द नॉर्म ऑफ यूनिवर्सलिज्म बिकॉज रेफरीज, अब जब पेपर रिव्यू होता है तो इससे जो नॉर्म ऑफ यूनिवर्सलिज्म है वो रीइंफोर्स होती है. कैसे कि जो रेफरी है जज द स्टडी ऑन इट्स मेरिट अलोन, क्योंकि वो जो पेपर को रिव्यू जब करता है तो वो इसको सिर्फ मेरिट पे देखता है. They evaluate the research based on its clarity, adherence to the high standard of research methodology, and original contribution to the knowledge. The referee returned their evaluation to the editor who decides to. जब रिपोर्ट्स बन जाती हैं एटलीस्ट 3 लोगों की रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं एक पेपर के किस्मत का फैसला करने के लिए कि उसको पब्लिश करना है या उसको पब्लिश नहीं करना. तो जब तीनों रिव्यूअर रिपोर्ट्स बना लेते हैं तो वो ज़ाहिर है एट द सेम टाइम और सम टाइम एट द डिफरेंट टाइम्स वो एडिटर को भेजते हैं. एडिटर फिर 3 काम करता है. रिजेक्ट दी रिपोर्ट, वो पेपर को रिजेक्ट कर देता है अगर रिव्यूअर ने ये कहा हो कि ये पेपर इस काबिल नहीं है कि साइंटिफिक नॉलेज को में कंट्रीब्यूशन का सबब बनेगा. और अगर वो कहें कि पेपर अच्छा है लेकिन उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो देन आस्क द ऑथर फॉर रिवीजन. और फिर उसको वो ऑथर को एडिटर कहेगा कि वो जो रिविजन्स और जो चेंजेस रिव्यूअर्स ने रिकमेंड की हैं, रेफरीज ने रिकमेंड की हैं, उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए और पेपर को रिवाइज करके दोबारा सबमिट किया जाए. और द थर्ड ऑप्शन इज एक्सेप्ट इट फॉर पब्लिकेशन एज इट इज़. ये बहुत कम होता है, यानी कि आपने पेपर भेजा हो और उसको रिव्यू करने के बाद ये कहा जाए कि इसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया जाए फॉर पब्लिकेशन विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, इवन द माइनर चेंजेस. मोस्ट ऑफ द टाइम चेंजेस आती हैं, चाहे वो मेजर चेंजेस हों चाहे वो माइनर चेंजेस हों. ये जो रिजेक्शन होती है और एक्सेप्टेंस होती है आउटवे, ये बहुत कम होती है. इसके दरमियान ज़्यादातर काम होता है कि मेजर रिविजन्स आती हैं तो द ऑथर्स आर asked to incorporate those major changes into the paper and improve the paper and resubmit it for evaluation. और अगर माइनर आती हैं तो देन भी वो माइनर चेंजेस लगाने के बाद पेपर दोबारा जो है वो सबमिट किया जाता है, जर्नल को अपलोड किया जाता है और फिर एडिटर फैसला करता है कि उसको वापस रेफरीज को भेजना है या उसने खुद ही फैसला करना है उसको पब्लिश करने का. Blind review, a process of judging the merit of a research report in which the peer researcher do not know the identity of the researcher and the researcher does not know the identity of the evaluators in advance. That's why we call it a blind review process, and this process is responsible for creating credible scientific knowledge and valid scientific knowledge. Because जितना भी scientific knowledge प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो ब्लाइंड रिव्यू है कि जो पीयर रिव्यूअर्स होते हैं, जो उसी फील्ड के एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, वो उस रिसर्च को मेरिट पे जज करते हैं एंड देन दे डिसाइड टू पब्लिश इट और टू रिजेक्ट इट. तो दैट्स व्हाई द साइंटिफिक नॉलेज is being advanced in all the fields, and that's why we know too much. I mean, we know a lot about the issues, about the challenges, about the prospects in all fields because of this process of blind review and then publishing of the research as a result of this process. दूसरा जो है जी, दूसरी जो नॉर्म है साइंटिफिक कम्युनिटी की वो ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म है. साइंटिस्ट शुड नॉट एक्सेप्ट न्यू आइडियाज और एविडेंस इन ए केयरफ्री अनक्रिटिकल मैनर. अब साइंटिस्ट बड़े शक्की किस्म के लोग होते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में वो हर चीज़ को शक की नज़र से देखते हैं. वो आइडियाज़ को ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर लेते, एविडेंस को भी ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड और केयर फ्री मैनर में एक्सेप्ट नहीं कर लेते. दे शुड चैलेंज एंड क्वेश्चन ऑल एविडेंस एंड सब्जेक्ट ईच स्टडी टू इंटेंस स्क्रूटनी. जो भी साइंटिस्ट के पास काम आता है, स्टडी आती है, तो वो उसकी एविडेंस को चैलेंज करते हैं, उसको दे सब्जेक्टेड टू स्क्रूटनी, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, वो उसको एवेलुएट करते हैं. देखिए हमारे यहाँ तो क्रिटिसिज्म एक समझा जाता है ना कि वो नेगेटिव होती है, क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव भी होती है. सो क्रिटिसिज्म मीन्स द थिंग्स आर बीइंग seriously evaluated. The purpose of their criticism is not to attack the individual but to ensure that the method used in this research can stand up to the close a careful examination. And this is what I was saying कि क्रिटिसिज्म का मतलब किसी फर्द को जो है तनकीद करना नहीं, बल्कि इस बात को इंश्योर करना है कि जो मेथड यूज़ किए हैं वो कितने अप्रोप्रिएट हैं और जो रिसर्च पैदा की प्रोड्यूस की जा रही है, साइंटिफिक नॉलेज प्रोड्यूस किया जा रहा है वो कितना क्रेडिबल है. For instance, the blind review is a very conscious way to ensure
quality control. Its purpose is to advance the norm of organized skepticism and universalism in scientific community, ताकि जो knowledge produce हो वो credible knowledge हो. Then disinterestedness. Scientists must be neutral, impartial, receptive and open to unexpected observations and new ideas. तो साइंटिस्ट और बुनियादी तौर पे उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं होती, वो न्यूट्रल होते हैं, वो इम्पार्शल होते हैं, वो जो भी नई एविडेंस आती है वो उसको उसके लिए रिसेप्टिव होते हैं, ओपन होते हैं, उसको वो एक्सेप्ट करते हैं न्यू आइडियाज को. They should not be rigidly wedded to a particular idea or point of view. The scientists are not the common people. They are all ready to accept. They are already ready to accept the new ideas, the new methodologies, the new knowledge in any field. They should accept, even look for evidence that runs against their positions, and should honestly accept all findings based on high quality research. So even अगर findings नहीं, उनके अपनी जो notions हैं, अपने जो theoretical frameworks हैं, अपनी जो उनकी understandings हैं, उसके खिलाफ भी आती हैं तो वो उसको accept करते हैं. क्यों करते हैं? It should be ensured as public funding of research. Public funded research is often seen as a more objective because it is less tied to the commercial interest. So जितनी research public funding से होगी वो रिसर्च ज़्यादा क्रेडिबल होगी, क्योंकि उसमें कमर्शियल इंटरेस्ट बहुत कम इन्वॉल्व होगा, तो उसमें जो pressure होता है to compromise the findings or to align the findings with the interest of those who fund the research वो कम होता है. So that's why public funding अगर रिसर्च की है तो हम ये कह सकते हैं कि नॉलेज ज़्यादा क्रेडिबल और साइंटिफिक नॉलेज ज़्यादा क्रेडिबल प्रोड्यूस हो रहा है. Reproducibility and open data, that's important. Disinterestedness is supported when other researchers can independently verify the results. जब कोई भी रिसर्च हम पब्लिश करते हैं तो उसकी जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरे लोग उसको रेप्लिकेट कर सकें. उसकी रेप्लिकेबिलिटी जो है उसके लिए ज़रूरी है कि डेटा जो है वो अवेलेबल हो. जो स्टडी पब्लिश होती है उसका डेटा, उसका इंस्ट्रूमेंट, उसका क्वेश्चनेयर, everything must be available free of cost so that other researchers could replicate those studies. And then professional ethics. Codes help scientists focus on knowledge creation rather than personal or financial gains. So the scientists are the people who work for the community, or work for the society, not for their personal or financial gains, because that's what the knowledge or the scientific knowledge means. So that's why the scientists are very critical to adhere to the ethical principles or professional ethics, so that they produce a knowledge which is community oriented rather than the personal or financial gain oriented. And then the fourth one is communalism. Scientific knowledge must be shared with others. It is, the part of community, what we call. It belongs to everyone. When a scientific study is completed and it's published, no, it doesn't belong to the researcher. इट बिकम्स द पब्लिक प्रॉपर्टी. जब एक पेपर पब्लिश हो जाता है तो उसके बाद वो पब्लिक का है, वो उस आथर का नहीं है. सो इट बिलोंग्स टू एवरीवन. क्रिएटिंग साइंटिफिक नॉलेज इज अ पब्लिक एक्ट and the findings are public property, so the public can consume those findings. And if you don't find any paper, you can ask the author to share that paper with you, available for all to use. New knowledge is not formally accepted until other researchers have reviewed it and it has become made publicly available in a special form and style. तो नॉलेज बनता ही साइंटिफिक तब है जब दूसरे लोग उसको रिव्यू करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं, उसको रेप्लिकेट करते हैं, उसको रिप्रोड्यूस करते हैं. ओपन एक्सेस, इसीलिए देखें ये जो मैं आपको करेक्टरिस्टिक्स बताने जा रहा हूँ, ओपन एक्सेस टू रिसर्च. आप देखें साइंटिफिक नॉलेज इज फ्रीली अवेलेबल टू द पब्लिक एंड अदर रिसर्चर्स. इसलिए आजकल ओपन एक्सेस जो जर्नल्स हैं वो बहुत कॉमन फीचर बन गए हैं, ताकि जो पेपर हैं, जो रिसर्च है, वो हर एक को अवेलेबल हो. I mean, either the people come from the advanced countries or from the developing countries. Publication of result, when researchers publish their finding, they contribute to the collective pool of knowledge that others can build upon, और फिर दूसरे लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं उसके ऊपर. और I mean, standing on that knowledge, जिसको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि standing on the shoulders of giants, so then the people can look further. तो जो नॉलेज आप प्रोड्यूस हम करते हैं उसके ऊपर लोग बिल्ड करके आगे देख सकते हैं, नए इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं. सो द पब्लिकेशन इज इम्पोर्टेंट of the results. Scientific conferences and symposia, I mean, these are the two best venue where the findings are shared. Presenting at these events ensure that knowledge is shared in real time, often before the formal publication process, and getting feedback to improve it. So the conferences or the
The networks where they are the platforms where the scientists and the researchers share their findings, and their colleagues, their I mean the people from their field, what we call peers, they critique their work, and they try to they help them to improve their work. And symposia, they both have the same purpose. Data repositories and databases, raw data beyond scientific knowledge is available for validation and reuse by the community. So the data जो हम रिसर्च करते हैं, उसका जो डेटा होता है, उससे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, वो पब्लिकली अवेलेबल होने चाहिए साइंटिस्ट को, ताकि वो उस पर बिल्ड करके आगे जो है वो रिसर्च कंडक्ट कर सके. Last one is honesty. This is a general cultural norm, but it's especially strong in scientific research. Scientists demand honesty in all research. Dishonesty or cheating in scientific research is a major taboo. The scientists should be honest regarding designing their studies, conducting their studies, analyzing their data, and then reporting their results. At all phases, at all these stages, scientists need to be honest, and they need to adhere to the ethical standards of scientific knowledge production and dissemination. एंड देन की फीचर्स क्या हैं जी साइंटिफिक कम्युनिटी के, अब वो देख लेते हैं. कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन है जी. द साइंटिफिक कम्युनिटी थ्राइव्स ऑन कोलैबोरेशन ऑफन बिटवीन रिसर्चर्स फ्रॉम डाइवर्स डिसिप्लिन्स एंड जियोग्राफिकल लोकेशंस. साइंटिस्ट मिल के काम करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के, डिफरेंट फील्ड्स के. This interdisciplinary approach allows for the integration of knowledge across fields, leading to more robust scientific findings. For example, in addressing climate change, scientists from physics, ecology, economics, and social sciences work together to create comprehensive models and strategies that are very helpful to address the issue of climate change. So, interdisciplinary जो research है, even across national research, that's very useful, so that collaboration is very important among the scientific community. That is the essence of producing new scientific knowledge. And then peer review and critique. A defining characteristic of the scientific community is the peer review process, in which the research findings are evaluated by other experts in the field before publication. This process ensures the validity and credibility of the scientific finding. Peer review also allows for constructive critique, which is essential in refining theories and methods. And that's very important, because peer review process is the process, and it's the filter which filters the scientific knowledge. जो इससे गुजर के scientific knowledge produce होता है, that's called the credible scientific knowledge. Then the third one is the shared values and norms. The scientific community operates under principles such as transparency, reproducibility, and objectivity. So the things are objective, they are transparent, and they could be reproduced. इसको हम replicability भी कह सकते हैं, reproducibility को. These values are essential for ensuring that scientific findings are reliable and other researchers can replicate studies to verify results. Adhering to these norms is crucial, or is critical, for maintaining trust in the scientific enterprise. And then the publication and dissemination. Scientists disseminate their findings through journals, books, and conferences, making their research available to the wider community. This open sharing of the information accelerates the development of scientific knowledge and allows other researchers to build on the previous work. For instance, the publication of genome sequence during the Human Genome Project allowed researchers worldwide to access this data and make further advancements in the medicine and genetics, because the data for this project was available to everybody. So scientists from across the globe can build their studies on that data and can replicate those studies as well. And then the funding and resources allocation. This is also adequate funding is required to conduct the research, but these days many scientists depend on grants and institution support, which are often very repetitive. So that's why the funding is very important. It's becoming important in these days, and it plays an important role in conducting scientific research, because if no funding is available, then the scientific research is not possible to conduct. So many scientists, often competitive
environments, many scientists are unable to get the funding. This can restrict the scope of the research and delay scientific progress. So the funding, the availability of funding is very important to conduct the research. And then ethical consideration, the scientific community also faces ethical challenges such as ensuring responsible use of technology, particularly in the field of like genetical engineering, artificial intelligence, medical research. Ethical guidelines are established to ensure that research benefits society without causing harm, but new technology often raise unforeseen ethical questions. So, ethical considerations are very, very important in the scientific community because then the knowledge can become credible when the scientists adhere to the ethical considerations. And the reproducibility crisis in recent year, the reproducibility or what we call replicability of scientific studies has become under scrutiny in particular fields such as psychology and medicine. Some key studies have been difficult to replicate, leading to what is called the reproducibility crisis or replicability crisis. This has promoted effort within the community to improve research transparency, data sharing, and methodological rigor. The suicidal death of the Japanese scientists because the lack of the replication of the own study by themselves is a very very important example of that because the study of the Japanese scientist was published in a nature journal, but when the other scientists tried to replicate that study, they were unable to replicate that study, and as a result of that replicability crisis, the scientists committed suicide, and then nature wrote editorial on that scientist because he was a leading scientist in the field of stem cell. So I think the scientists need to be very careful that their methods, their methodologies, their research design, their data are transparent, they are available, they are replicable so that the other researchers in the field could replicate those studies as well. In conclusion, the scientific community is a global network of researchers working collaboratively to expand human knowledge, address scientific challenges, and foster technological innovation. Through process like peer review, interdisciplinary collaboration, and ethical research practices, the community continues to be a driving force in scientific discovery and societal progress because that is the contribution of the scientific community. All the knowledge in our world which is created by the efforts of the scientific community. So the transparency, the replicability, the skepticism, the universalism, honesty, all these norms are very important to create a knowledge which is credible, which is objective, and which is trustable. I mean which people can trust. These are the resources which I have used for preparing this lecture. If you find interested, you can utilize them and you can find them. I think you will find this lecture interesting regarding the uh, 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 regarding what scientific community is, what are the norms of scientific community, what is the core of scientific community, what are the key features of the scientific community, and then finally what are the challenges which scientific community faces. Keep watching.